civil engineering, they don't know how to read Sadbara. They don't know how to verify the Double property click. documents. They know how to buy a flat. These are very serious issue. As a civil engineer, you should know this stuff, right? I will give you one practical example. If say you have completed your civil engineering Engineering and data. some of your relative wanted to buy a flat, so as a civil engineer, he will see you as Engineering a data valuable sources. person. He will ask you, hey buddy, come with me. I wanted to buy a flat. See that documents are General genuine or material. not. Say verify that super built up area, carpet area. But as a civil engineer, 90% of guys Concrete. don't have this knowledge. So this is very serious issue. Then Project. I will tell you how I am using my knowledge. I am the second generation of Geometry. real estate in my family, I will say. सर इसमें सॉइल स्ट्रक्चर Apart from Apex consultant, I am a भी तो सॉइल part-time स्ट्रक्चर builder पिछली also. बार We जैसे have लिया था ना वैसे ही 3 है. projects सॉइल going on स्ट्रक्चर लेना है in तो my भी city ले in सकते हैं. Jalgaon. चलो सॉइल स्ट्रक्चर भी लेते First हैं. is Cool Homes, Okay. then Lakshmi Township, and recently launched Sukhakarta Lakshmi Township. So what I did there, my father purchased a plot. We have designed as per the client requirement. So I use my civil engineering skill, my structural design skill, my software skill there, and I save up to 6 to 7 lakhs as a consultant fee. Now, now my Coulombs project is almost complete. Let me tell you, in that recession also, we have almost sold 90% of inventory सर इसमें सॉइल in our मटेरियल दिया scheme. हुआ है ये Now, जियो 6 one नंबर पे client देखिएगा has proposal. जियो He मैकेनिकल has मेटल bought two मटेरियल्स में flats of Okay, 2 okay. BHK, and he wanted to convert that in one huge penthouse. So what we have do, we have changes the plan. I will ये show 9th you in नंबर में next सॉइल video. That will be purely technical. How we proceed from that interiors, कुछ and we have अच्छा saved almost 10 to प्रोजेक्ट. 15% in interiors using our skills. Because how can we do that? Because we have right approach, we have right skills, we have software knowledge, and we know what डिजाइन client मॉडलर. is required exactly. So, and this is the second opportunity Now I'm talking always about. First if is you real estate. wanted Real to estate, in real estate, develop a there are soil also structure two interaction, parts. First one is always technical model a part, soil and first, second one is then use selling structure part. second. In both, we Okay, have equal to opportunity. develop the proper Again, real contact with estate the is soil. divided in lands You and in consider the scheme, flats, bungalows, etc. Then sketching. in interiors, what we can do initially, we can help various architects and various interior designs Rectangle. to prepare a 3D views. For 3D views, we have three softwares basically: SketchUp, 3ds Max, and Revit. So what are the difference between these three softwares? Basically, guys, SketchUp is done for the various cut views, various So as section per our views. In problem slide, I statement, will show you various this is 9 clients meter, views we 4.5 have meter. done in recent Okay, months. So and it is depth we very have very assumed, realistic. height we have The assumed 4 difference between meters. SketchUp and Actually 3ds this Max is is a that if you elevated got water tank 10 we are projects proposing at a here. time, But if you SketchUp say will it do is underground in water less tank, time if you wanted rather to than consider 3ds the Max. soil structure interaction, In as compared to 3ds assume the height of tank SketchUp 4 and meter. 3ds Max, Reference is given 3ds IS Max can provide 33708 you a is walkthrough. water tank Okay, design so what is IS code. walkthrough? Walkthrough Okay, is that suppose so I am constructing go a to building, this. and I have one So concept that my kitchen should be एवरेज like अभी this, ये किसी my पेपर में तो hall नहीं will be दिया है, like this, लेकिन the जो hall भी size will साइज be है वहां like से this, 3 interior will be मीटर like this. तक So सॉइल this का is इफेक्ट all रहता है. in my ओके, mind. ओके So हाँ, तो उस what हिसाब will से हमें I ये do बॉक्स बनाना to पड़ेगा सॉइल का. propose the client? I will create a 3D film. Okay, when the client will सर आपने enter in the माउस कांस्टेंट रखा है ना? hall, हेलो, हाँ how हाँ it सर will look हाँ like. हाँ, कौन So guys, ये it दो is दो called कर्सर as दिख रहे हैं मुझे इसमें. walkthrough, and we are charging per second like 300 to 400 rupees per second. That is the charges going on in the Click on market. dimension. Basically, for walkthrough, we charge lump sum amount 15 to 20,000. So these are the opportunity we get General. using the various softwares. We can help our society, we can help our relatives with the various plans, various designs. You you observe in surrounding how many construction activities going on. Okay. There are So many size we will give redevelopment policies coming from the government. So don't worry about the recession. There are plenty of opportunity for civil 9 engineers, 12 right? So step by 12 step, by 8. I will tell you how to change your attitude, because I have seen the engineering student faces. They are very sad.
no enthusiasm, no courage, because we could not find the right path. Okay, we'll buy it. शेड्यूलिंग का काम चालू रहता है। अब ये शेड्यूलिंग हमें क्या करना पड़ता है कि आपका जो ये एस्टिमेशन होता अननेसेसरी है, लाइंस क्रिएट हो गए, तो उसको एस्टिमेशन ट्रिम के कर बाद देंगे। आपका जो काम रहता है वो शेड्यूलिंग का रहता है। अब एस्टिमेशन क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आपने कोई एक्टिविटी यहाँ पर शेड्यूल की, फॉर एग्जांपल कि आपने पीसीसी शेड्यूल किया है या फिर कौन सा भी फुटिंग का काम शेड्यूल किया है, तो आपको यहाँ पर क्या देना ट्रिम। पड़ता है, उसका मटेरियल। मतलब क्या कि आपको पीसीसी चालू किया है तो पीसीसी के लिए आपको कितना सीमेंट लगेगा, सैंड कितने लगेगी, एग्रीगेट कितने ब्रास लगेगी, तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। और उसके हिसाब से वो क्या करता है कि आपको उसका टोटल कॉस्टिंग दिखाई देगा। ओके, अब सर मैं आप आपको एक क्लिक सीन कर दीजिए उसको, ट्रिम को, दिखाता हूँ। यहाँ से नहीं हो एक रहा। मिनट। ये इधर ऑप्शन है, सेशन क्लोज। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, अभी प्लानिंग करना है। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर क्या दिखा जाएगा, अब पीसीसी है तो पीसीसी के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर रिसोर्सेस अप्लाई किए, कंक्रीट ग्रेड अप्लाई किए, आरसीसी ब्लेडर है, मजदूर है, जो भी आपको लेबर्स लगने वाले हैं, तो हम वो एक्टिविटी को असाइन करने वाले हैं। और इसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा कि प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन मिलेगा। मतलब ये अपना प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के लिए हमारा कितने ड्यूरेशन लगेगा, उसकी स्टार्ट डेट क्या है, फिनिश डेट क्या है, ये हमें मिलने वाला है। उसके बाद क्या मिलने वाला है कि प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट, मतलब आपने एक बजट किया है बाबा कि एक आपका प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, उसका आपने क्या बजट किया है कि 60 लाख या 40 लाख या फिर जो भी 1 CR के लिए आपने बजट किया है। अगर आपके बजट के हिसाब से प्रोजेक्ट चलेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या रहता है कि हमने वो टेंटेटिव शेड्यूल किया रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर पीसीसी है तो पीसीसी के लिए इतना इतना खर्चा आना चाहिए, फाउंडेशन है तो उसके लिए इतना इतना ट्रिम। खर्चा आना चाहिए, और उसके लिए इतना ड्यूरेशन लगेगा। वो एक्टिविटी एक 4 से 5 दिन में वो खत्म होगी। ये आपने क्या किया है, शेड्यूल किया है। अब इसके हिसाब से ही काम चलेगा, ऐसे नहीं है। थोड़ा फर्क भी होगा, क्योंकि ये लाइंस और ये लाइन, कोई ये लेबर्स ट्रिम नहीं करना मिल है। सकते या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मटेरियल अवेलेबल नहीं रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसको अपडेट करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि आप हो रहा है एक एक्सेस शेड्यूल मेरा। करते हैं, और ठीक है शेड्यूल के सर, हिसाब स्टॉप से कर फॉर एग्जांपल कि करता हूँ। आपने कुछ शेड्यूल किया है कि आपको ट्रिप को जाना है। ओके, तो ट्रिप ट्रिप के लिए क्या करते हैं कि हमारा ये पॉइंट है, उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है। ओके, ये आप क्या करते हैं, ये शेड्यूल करते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। वही मेथड हमें यहाँ पर यूज करना है कि हम शेड्यूल करने वाले हैं और वो शेड्यूल का हमें फॉलो करना है। उससे आपको क्या मिलेगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपने जो शेड्यूल किया है उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट जा रहा है या फिर थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। अगर आगे पीछे हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी एक्टिविटीज में उसको एडजस्ट ओके, करना गो टू पड़ेगा। मॉडलिंग। और आपको जो भी आपने फिनिश डेट दिया है प्रोजेक्ट का, तो उस वो टाइम पे इसको आपको डेप्थ वो देना है, खत्म सॉइल करने का का जो भी आप डेप्थ रहेगा। ट्राई करोगे। ओके, थोड़ा थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो भी जाता है, एक अप्लाई। दो महीने का गैप भी हो जाता है। अभी कोविड में ही देखो ना कि कितनी एड साइट्स बंद हो गए, फ्रोजन किया तो भी तो चलेगा। ऑब्वियस है कि थोड़ा फर टाइम तो एंड आपका 4 जाएगा ही। + 3 ओके, 7 लेकिन आपके पास 7 एक शेड्यूल रहता है कि हमें ये काम करना है, ये एक्टिविटी करनी है, इस बजट में आपको डायरेक्शन। काम करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट फॉलो करते हैं। उधर ओके, समझ में आ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का क्या फायदा है, समझ में आ गया क्या आपको? बोथ सिमेट्रिकल। हाँ, अभी क्या करना है कि आपको पहले क्या करना है कि इसमें आज थोड़ा इंट्रोडक्शन और थोड़ा टाइम्स और उसके बाद न्यू प्लेन। कैलेंडर सेट करने का ही देखना है, क्योंकि थोड़ा वो क्या है कि आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करते आप, फ्रॉम तब तक फेस। आगे नहीं जाएंगे हम। क्योंकि आपको इंस्टॉल करके दिया है सूरज ने, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट बेस इंस्टॉल फेस। करके दिया है। हाँ, तो आज जो भी मैं वो सिखाऊंगा वो सेंट्रोइड हो आप गया। क्या करो
कि क्या घर क्या? पे प्रैक्टिस करो। सर वो तो टाइप में आपको सेंट्रॉइड है। कैलेंडर सिखाऊंगा, कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर में ओके क्या ओके रहता ओके। है कि आपका कोई भी अच्छा अच्छा कंपनी अच्छा, तो रहेगी, इसके अगर आपकी सेंट्रोइड में आ कंपनी गया है वो। वो हाँ सर। संडे टू हाँ। संडे ऑफ ठेवती न्यू ऑफ प्लेन ऑफ रखते हैं आप, या फिर हमारी कोई कंपनी है, हमारी कंपनी सैटरडे को ऑफ रखती फ्रॉम है। तो उसके फेस हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है कि आपको कैलेंडर क्रिएट करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस क्या फेस दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि सैटरडे संडे अप्लाई बोथ डे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ऑफ रखा गया है। जनरेट तो आपको आपके कंपनी के हिसाब से कैलेंडर सेट करना पड़ता है। अभी माइक्रोसॉफ्ट स्केचिंग प्रोजेक्ट में क्या है, डिफॉल्ट आपको करेंसी सेट कौन सी रहती है कि यूएस डॉलर, यहाँ पर करेंसी सेट डिफॉल्ट रहती है। आपको उसको रेक्टेंगल पहले चेंज करना पड़ेगा, उसको आपको और इंडियन रेक्टेंगल रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब स्टेप्स लिख के लो। गिव डायमेंशन ओके, गो टू फाइल, संडे टू संडे हम सेशंस लेंगे आपके, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा संडे टू संडे हमें में आपको कि एक वो चार उतना जो पाँच, पार्ट है वो कट आपका करना साइड पड़ेगा। एक्सपीरियंस है ना? ओके, या फिर वॉल बना के भी हम कट कर सकते हैं, कोई शायद प्रॉब्लम नहीं। आवाज आ रहा है आपका, बोलो। हम्म। हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है आपका। हाँ, आ रहा है क्या? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि संडे टू संडे अगर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट काफ़ी लेट हो जाएगा ना उसमें। नहीं नहीं, हम ज्यादा ज्यादा सेशंस लेके वो कवर कर देंगे, एक चार पांच संडे में हम कवर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपको पूरा एक्सेल आएगा। सर सिर्फ वो आप क्या ऐसे नहीं हो करो रहा कि तो मैं आप जो मेरे भी को आपको बताते जाओ, असाइनमेंट मैं दूंगा करूँ। वो आप हाँ पूरे वीक चलेगा में चलेगा। करते जाओ, कोई ठीक प्रॉब्लम है नहीं ना? रहेगा आपको। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, वो कनेक्शन अब क्या एक्चुअली करना है लॉस हो आपको, रहा पहले है। करेंसी सेट करना है। करेंसी हाँ सेट वही करने सर के लिए इसलिए। गो टू फाइल, ऑप्शंस, गो टू फाइल। हाँ, सेकेंड। ऑप्शंस, डिस्प्ले। डिस्प्ले। यहाँ पर करेंसी दिख रही है यूएसडी, मतलब यहाँ पर क्या डिफॉल्ट है, यूएस डॉलर में यहाँ पर करेंसी सेट है। आपको सिर्फ यहाँ पर ड्रैग करना है और आई टाइप करना है। आई टाइप करने के बाद यहाँ पर आईएनआर आएगा, इंडियन रुपीज। सिलेक्ट आईएनआर। हाँ। ओके, इसका सिंबल आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर आरएस चाहिए हाँ। रुपीज के लिए तो आरएस आप टाइप कर सकते हो, या फिर जो भी मेरे अभी करेंसी का सिंबल था वो, तो आप वो कर सकते हो। जो भी आपको रहेगा, जो भी आपको कन्वीनियंट रहेगा वो आप सेट कर सकते हो। समझ में आया? प्लेसमेंट क्या है? क्या क्या? उसके नीचे एक ऑप्शन ये प्लेसमेंट रुपीज, का है। रुपीज है, रुपीज आपको कैसे चाहिए, रुपीज वन या वन रुपीज, या फिर ऐसे चाहिए, ये आप सेट कर सकते ठीक है। हो। ओके, क्लिक। तो ये कैलेंडर में पहले सेट करने के लिए नहीं अपना नहीं नहीं, रिमोट यूजर एज पहले करना हमें सेलेक्ट। होता है क्या? जो भी रहता है आप एक आपको बार पहले कनेक्ट कर करेंसी लीजिए सर सेट करना उसको। पड़ता है, क्योंकि आप जैसे भी कॉस्टिंग डालोगे वहाँ पे यूएस डॉलर में ही जाएगी। अच्छा, इसलिए हमें पहले रुपीज में सेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें कैलेंडर सेट करना ठीक पड़ेगा। है। ओके, कैलेंडर सेट करने के लिए गो टू प्रोजेक्ट, हाँ। चेंज वर्किंग टाइम, यहाँ पर एक कैलेंडर क्रिएट करो। अब यहाँ पर हम जो भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में जो भी कैलेंडर हम फॉलो करते हैं वो हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड कैलेंडर फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड कैलेंडर मतलब क्या कि उसका वर्किंग आवर्स। अब साइट पे आप क्या करते हो कि डे नाइट भी काम होता है कभी कभी, राइट? हाँ। तो डे नाइट भी काम होता है कभी कभी, तो वो डे नाइट हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं आवाज़ करते। आपका प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। हेलो। अभी आ रहा है आवाज? आपका आवाज़ अभी कट रहा है, तो आ रहा है। ये आप बोले कि गो टू प्रोजेक्ट, उसके बाद कैलेंडर के लिए आप कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं? ठीक है, चेंज वर्किंग टाइम। प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद चेंज वर्किंग टाइम। चेंज वर्किंग टाइम। हाँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर कैलेंडर खुद का एक क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो हाँ सर, क्रिएट ऐसे करने के करते लिए हैं। क्लिक ऑन वहाँ क्रिएट न्यू साइजेस दे कैलेंडर। दीजिए बॉक्स को। हेलो। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड कैलेंडर है जो भी आपका रहेगा।
वो स्टैंडर्ड कैलेंडर आपने कॉपी किया। अब स्टैंडर्ड कैलेंडर क्यों कॉपी किया, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है कि हम साइट पे कभी कभी डे नाइट भी काम करते हैं, नाइट में अपना स्लैब साइज है तो वो हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, जो भी आपका काम रहेगा वो ट्रैकिंग में हम 9 कन्वर्ट मीटर और करेंगे। जो 4.5 भी आपका मीटर। काम रहेगा हाँ, डे नाइट यहाँ काम से करता है डिस्टेंस, वो हम ट्रैकिंग में उसको कवर कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, हेलो, लॉन्गर समझ में आ रहा लॉन्गर है? इज 9 मीटर वो हम और बाद ये में कवर कर 4.5 लेंगे। मीटर है। ओके, आपको जो भी शेड्यूल करना है वो ड्यूरेशन, बट ये पहले हम लोग कैलेंडर बनाते हैं किस पर्पज से? क्योंकि क्या रहता है कि अगर आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के लिए क्या रहेगा कि संडे को ऑफ रहेगा, मेरी कंपनी सैटरडे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सैटरडे संडे बोथ बोथ डे ऑफ दिख रहा है। अगर आपने कोई एक्टिविटी शेड्यूल की, दिस कि इज कौन सी एक्टिविटी शेड्यूल की, इसका फॉर हाफ। एग्जांपल कि एक्सकर्शन का कितना लिया काम था आपने हमने? शेड्यूल किया फ्राइडे 12 को। मीटर लिया था ना। ओके, 4 दिन का काम है। तो एक 2 मीटर पे ओके, कर तो दीजिए। वो क्या करेगा, सिमेट्रिकल नहीं आपको रहेगा तो भी सॉफ्टवेयर को चलेगा, पता नहीं कि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं सैटरडे है। संडे ऑफ है, 1.5 मीटर कर ऑफिस दीजिए, चालू है। वो 1.5। क्या करेगा, वो उसका कैलेंडर फॉलो करेगा। हाँ, वो क्या करेगा, अभी थोड़ा फ्राइडे को सेंटर में आ एक्टिविटी गए। चालू करेगा, 1 सैटरडे संडे मीटर। 2 दिन ऑफ, उसके हाँ, बाद मंडे ट्यूसडे और ये जो वेडनेसडे L6 है, ऐसे वो 4 दिन के लिए एक्टिविटी शेड्यूल कर देगा। हाँ, उसको इसके लिए हमें 1.8 पहले कर दो। हमारा कैलेंडर क्रिएट करना पड़ता है। अब मैं कैलेंडर क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, फॉर ओके, एग्जाम्पल कि यहाँ पर मैं ठीक है। अपेक्स का कैलेंडर अभी कर रहा हूँ। एक इस पे और देन एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ अब यहाँ जिसका पर क्या थिकनेस करेंगे 150 पहले, अब mm यहाँ पर रहेगा। देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सैटरडे संडे बोथ डे ऑफ दिखाई दे रहा है। नहीं, न्यू ओके, यहाँ प्लेन पर करने आप की क्लिक जरूरत करोगे तो नहीं यहाँ है। पर क्या ही दिखाई दे रहा, न्यू प्लेन करने नॉन की वर्किंग जरूरत टाइम। नहीं अब है। मुझे सैटरडे को क्या करना है कि वर्किंग रखना है। ओके, तो स्केचिंग में वर्किंग जाके रखने के लिए गो टू वर्क उसके वीक्स, अंदर एक और रेक्टेंगुलर बनाना है। क्लिक ऑन वर्क वीक्स, देन क्लिक ऑन डिटेल्स। हाँ, फिर डायमेंशन में जाके लेंथ स्लैश डिस्टेंस, ओके, वहां से अब मंडे टू सैटरडे 0.15 मैंने ड्रैग 0.15 करके ऐसे सेट किया। उसको मेंटेन करना। मंडे टू तो सैटरडे उसमें मैंने, सैटरडे को भी चूज कर लेंगे। हाँ, मंडे नहीं, टू ये डिस्टेंस सैटरडे नहीं मैंने दिया तो भी ड्रैग चलेगा। करके सिलेक्ट कर ठीक है, लिया। अभी उसके बाद 1.5 यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन है, देखो, 0.15 सेट डेज 0.15 टू बी मतलब स्पेसिफिक वर्किंग 0.3 टाइम। कम हो जाएगा। उससे अच्छा लेंथ स्लैश ये डिस्टेंस सेट में, कर हाँ, दिया। ये आपका जो है जो ना, भी ये हर ऑफिस का जगह टाइम रहेगा या फिर जो भी आपका साइट का काम रहेगा, साइट का जो टाइम रहेगा 8 0.15 AM आप टू दे 12 दीजिए। PM, या फिर 1 PM टू 5 PM, या फिर 6 PM, जो भी आपका हाँ, रहेगा यहाँ रखिए, पर वो सेट कर लो। H7 डिलीट करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर जो भी है हाँ, 12 to 1 ओके हमने कीजिए, लंच ब्रेक दिया है। H7 डिलीट कर दीजिए। ओके, इसलिए यहाँ पर 8 to 12 हाँ, और 1 to वहाँ 6 ऐसे H7 का जो दिखाई दे रहा बॉक्स है। दिख रहा है आपको, 12 to 1 हमने ये क्या रखा है बॉक्स पे कि क्लिक लंच करके ब्रेक उसे रखा है। डिलीट कर ओके, दीजिए। हाँ, उसके बाद देन V8 क्लिक ओके। डिलीट कर दीजिए, या डायमेंशन 9 में। क्लिक ओके। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हाँ, सैटरडे को वर्किंग हो गया और सैटरडे संडे को ऑफ हो गया। सैटरडे संडे को वर्किंग में। दिख रहा है। अब सैटरडे को भी वर्किंग दिख रहा है, संडे को नॉन या फिर वर्किंग दिख रहा है। समझ मैंने में आ रहा पिछली है? बार भी बताया था ना आपको, कंस्ट्रेंट का L9 L12, इसमें से एक आपको डिलीट करना उसके बाद पड़ेगा। एक्सेप्शंस। अब उसमें एक्सेप्शंस क्या है? में क्या रहता है कि जो भी आपका कंपनी का हॉलीडे रहेगा, एक मिनट, अब मॉडलिंग में रंग जाइए, पंचमी रहेगी तो वर्कर्स नहीं आते, स्केच 2 पे जाइए, या फिर गणपति दिवाली, जो भी फिर आपके से स्केचिंग हॉलीडेज में रहते जाइए, हैं कंपनी के, एक स्टैंडर्ड 12 to 15 स्केच हॉलीडेज 2 और रहते हैं स्केचिंग ऐसा। कौन से भी कंपनी में जाए। ओके, तो वो हॉलीडेज हमें यहाँ पर अपडेट करना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर स्क्रीन मॉनिटरिंग का ऑप्शन है आवाज क्या? प्रॉब्लम हो रही है फिर से सर आपका? हेलो, आ रहा है अभी? हेलो। हेलो, क्लिक ऑन स्केच 2, हाँ। यस। हाँ, यहाँ एक मिनट एक यहाँ मिनट। नीचे क्लिक कीजिए डायमेंशन में। हाँ, यहाँ L9 डिलीट कर दीजिए, अभी आ रहा है आवाज? ये दे दीजिए 0.15 दे दीजिए। हाँ, अभी थोड़ा कुछ है। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? 0.15 दे दीजिए क्लियर और है, V8 डिलीट कर क्लियर दीजिए। है, आवाज भी क्लियर। तो अब हेलो। स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? मैंने वो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया वापस। हाँ, बट स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। एक मिनट है, एक मिनट। ठीक है, वो स्केच ही डिलीट हो गया, फिर से कर दीजिए। हाँ, और एक बॉक्स बना दीजिए उसमें, अभी बना दीजिए एक बॉक्स। हाँ, अब ये इनर टू इनर जो डिस्टेंस है वो 0.15 पे सेट कर दीजिए।
दिख रही है अभी? हाँ अभी सही है, हाँ अभी हाँ सही है। हाँ। तो अब क्या करना है आपको, एक्सेप्शंस में जो भी आपको क्या हॉलीडेज रहेंगे, अब जुलाई अगस्त में अब क्या रहेगा कि गणपति की छुट्टी रहेंगी, 27 से 31 तक छुट्टी हम्म, है। ओके, तो आपको हम्म। पर्टिकुलरली अब ये जाके थिकनेस आपको हो गया। वो मंथ में आपको अभी यहाँ ऐड से करना इसको पड़ेगा। डिस्टेंस दे दीजिए। थोड़ी ही छुट्टी रहती है, 12 या 15 ही छुट्टीज रहती है जो भी आपके रहेगा हॉलीडेज, तो हाँ, इतने ही रहते हैं। तो ये आपका आउटर प्रोजेक्ट कब आउटर का ही चालू होने डिस्टेंस दे वाला है? दीजिए, वो तो अपने आप तब सेट से हो अगर जाएगा। मैं हाँ, आज शेड्यूल कर रहा हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट कल नहीं चालू होगा। आज शेड्यूल कर रहा हूँ इसका मतलब मेरा प्रोजेक्ट कुछ 6 महीने बाद या फिर 7 महीने बाद मेरा प्रोजेक्ट चालू होने वाला होगा, तभी मैं आज हम्म, शेड्यूलिंग 1 करता हूँ मीटर दे उसके दीजिए लिए। उसको। ओके, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर डे में जाके ये आपको वो 0.5 हॉलीडेज सेट करने दे दीजिए। पड़ेंगे। ओके, आप वो हॉलीडेज कैसे सेट करेंगे? अरे अब नहीं, 27 को अगर अंडू आपको कीजिए, हॉलीडे अंडू देना है, कीजिए। ओके, फॉर एग्जांपल आपको एक ही दिन हम्म, हॉलीडे हाँ हॉलीडे ठीक है, यहाँ ठीक है। पर ऐड करना है, तो ठीक है, 27 जो भी सिलेक्ट है, किया ये मैंने सब। डिस्टेंस का तो अब मॉडलिंग यहाँ तो पर हम देखते ही है। मेनली हमें सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन देना है। ऐसे ही रख दीजिए, मॉडलिंग पे क्लिक कीजिए इधर। ऐड किया। ओके, हम्म, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है स्केच आपको वन पे, कि एक ही दिन के स्केच लिए अब यहाँ पर 3 पे स्टार्ट क्लिक डेट और कीजिए फिनिश और डेट, उसको छुट्टी की एक्सट्रूड जो करके भी स्लाइस स्टार्ट डेट और मटेरियल फिनिश कीजिए। डेट आपकी वही रहेगी जब आपका एक ही दिन के लिए छुट्टी रहेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि 27 एक ही दिन के लिए मेरी छुट्टी है। स्लाइस मटेरियल ओके, करके तो स्टार्ट इसको डेट क्या है, थोड़ा 3D में 27 है, करिए ना, मतलब वो फिनिश डेट दिखेगा क्या है, ठीक से। हाँ, 27 है। 4 मीटर हाइट आ अगर मेरी जाएगा कंटिन्यू छुट्टी है 27 से 31 तक, जनरेट। ओके, तो फिनिश डेट अभी क्या रहेगी मेरी? इसमें क्या हो गया, अभी 31। यहाँ आउटर आउटर वॉल जो तो है उसके वो हिसाब से इसमें आपको फिक्स हो यहाँ गया। पर 2 वो सॉलिड दिख रहे हैं ऐड हो आपको। जाएगा। अब एक आपको सॉलिड है इसके इधर, हिसाब से हर एक दिस छुट्टी सॉलिड यहाँ इज पर सॉइल। आपको ऐड करना पड़ेगी। इसको रीनेम कर दीजिए सॉइल ओके, कह जो के, भी और आपके ये हॉलीडेज है हैं साइड वॉल तो वो से। पर्टिकुलरली आपको जाके वो मंथ में जाके आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा डे, और वहां पर आपको वो ऐड करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है ये? हम्म। अभी हमें क्या करना है, इसके एक हिसाब से ऐसे पूरा बेस वो स्लैब हर बनाना मंथ का है अलग कि अलग जो सिलेक्ट इसको करेगा सॉइल ना, को भी हाँ, कट हर कर मंथ देगा के लिए आपको, और जो हाँ, ये भी हर कर मंथ देगा, के लिए सितंबर क्या आपको, कहते अक्टूबर हैं ऐसा उसको, कुछ। हाँ हाँ, वो आपको मतलब हर मंथ में मिट्टी भी जाके आपको सिलेक्ट उसमें करना स्लाइस हो पड़ेगा जाएगी पर्टिकुलर वो और वॉल मंथ भी में क्रिएट हो जाके। जाएगी। अभी न्यू प्लेन करना है ओके, आपको। थोड़े ही रहते हैं, 10-12 छुट्टियां ही रहेंगी आपकी, वो आपको सिर्फ ऐड करना बेस पड़ेगा। फेस सिलेक्ट करना है, और वो फेस ओके, कैसे सिलेक्ट करना है, समझ में आ रहा इट शुड बी 4 मीटर बिलो द सॉइल। हाँ है? देन क्लिक मतलब ओके। एट द एंड ऑफ द अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने एट द कैलेंडर एंड तो ऑफ द क्रिएट वॉल, किया है। ओके, वहाँ वो कैलेंडर प्लेन हमने रहेगा सब उसका। बनाया वगैरह, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि सैटरडे संडे बोथ डे यहाँ पर ऑफ ही दिखाई दे रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है हम्म, कि हमने सिर्फ कैलेंडर क्रिएट किया, हम्म, असाइन नहीं किया। ओके, सिर्फ अच्छा, क्रिएट करके रखा है, हाँ हाँ, उसको असाइन करना है। अब हम्म, यहाँ पर गो टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। ओके, अब प्रोजेक्ट हम्म, इंफॉर्मेशन में आपको क्या रहेगी, यहाँ पर ओके, स्टार्ट डेट, अब स्टार्ट क्रिएट डेट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट प्लेन फ्रॉम फेस, बेस फेस शुड बी द जो एंड भी ऑफ द रहेगी यहाँ पर, जो करंट आपकी डेट रहेगी वही वो एंड ऑफ द कंसिडर वॉल। करेगा। उसको आपका हाइड कर दीजिए प्रोजेक्ट लगे आपको तो, यहाँ पर स्टार्ट सॉइल डेट को सेट हाइड कर करना दीजिए। पड़ेगा। ओके, जून ये जुलाई, अगर ट्रांसफॉर्म मेरा नहीं एक किया तो भी अगस्त के लिए चलेगा। प्रोजेक्ट चालू होने वाला है आप तो मैं सॉइल को यहाँ पर हाइड कर स्टार्ट डेट दीजिए और जो प्रोजेक्ट एक वॉल का अगस्त नीचे का रखूंगा। फेस है वो सिलेक्ट कर उसके दीजिए बाद आप। यहाँ पर कैलेंडर, हाँ जो भी आपने हाँ, क्रिएट उसके करा है, नीचे का यहाँ जो पर फेस है हमने ना, एपेक्स का हाँ 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 कैलेंडर हाँ क्रिएट किया हाँ, है, राइट राइट तो राइट। एपेक्स सिलेक्ट करेंगे, हाँ हाँ, देन क्लिक थोड़ा ओके। सा एडजस्ट कीजिए ना उसको। ओके, अभी हमने कैलेंडर इसके अपोजिट सिलेक्ट वाला किया है, एंड है ना लेकिन सर, यहाँ पर वो क्या सिलेक्ट क्या करना है दिखाई आपको। दे रहा है, सैटरडे संडे बोथ डे ऑफ ही दिखाई ये दे रहा है। सॉइल का ऊपर का क्योंकि हिस्सा है, ऐसे नीचे क्यों का हुआ? हिस्से सिलेक्ट करना है। क्योंकि हाँ, क्या हाँ, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में जाके जो फ्रॉम कैलेंडर फेस पे असाइन क्लिक किया, कीजिए और जो तो वो फेस है, सिर्फ ये ये गैंट जो चार्ट के आपने लिए ही सिलेक्ट किया है, असाइन इसके होगा। नीचे वाला ये फेस जो सिलेक्ट आपका करना है ये गैंट अपोजिट चार्ट है, डायरेक्शन में। ओके, तो इसके लिए ही वो सिर्फ फ्रॉम असाइन फेस ही होगा। लेना है और अब नीचे का इसके फेस क्लिक ये जो कीजिए। आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला जो चार्ट है, तो उसके लिए हाँ, आपको बेस जब फेस पे असाइन क्लिक करना कीजिए, पड़ेगा, तो वहां पर जाके या जो नॉट राइट सिलेक्टेड दिख क्लिक, रहा है उस पे क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन नॉन वर्किंग टाइम, देन सिलेक्ट कैलेंडर, हम्म, देन क्लिक ओके। अब वो सिलेक्ट हो जाएगा, बोथ अच्छा, साइड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्लिक ऑन द पर्टिकुलर। बेस फेस, नॉट सिलेक्टेड आ रहा है ओके, इधर। अब यहाँ पर हमने छुट्टी दी है कंटिन्यू 31 तक, तो यहाँ पर वो छुट्टी आ हाँ जाएगी। ओके, हाँ, जो भी ठीक है, आप एडिट करोगे वहाँ पे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हम्म। ओके, समझ में आ तो रहा है? इसका क्लिक ऑन थोड़ा द लिख बेस लेना है, फेस, हम एक्सेप्ट, हाँ, सिलेक्ट दिस बेस हम फेस। एक्सेप्शन का थ्योरी लिख रहे थे। हाँ ठीक है ना, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। आप हाँ, वीडियो देख देख अप्लाई के आपका अप्लाई जो पे भी सेशन पहले रहेगा ना, अभी इधर अप्लाई आपको पे मैं क्लिक वीडियो कीजिए, सूरत से तो मेल ये या फेस फिर सिलेक्ट मुझे कीजिए। मेल आईडी ये भेज इसके दो, कॉर्नर मैं के आपको एजेस जो है वीडियो ना, उस शेयर पे क्लिक करूंगा, कीजिए, तो मतलब वो सिलेक्ट देख हो के जाएगा आप वो। काम हाँ, कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि क्लिक आपको कीजिए ये ना सिर्फ सर इधर। जाइंट चार्ट क्या है, कहाँ तक है, कौन सा एरिया है? गैंट चार्ट, हाँ, कोई भी एज सिलेक्ट कर लीजिए ये उसका। पूरा गैंट चार्ट चार्ट, रहता है।
अच्छा जिधर हाँ हम लोग फेस, टेक्स्ट लिखेंगे। हाँ, जो भी आपको यहाँ पर शेड्यूल करना है ये हाँ वो आपका वॉल पे गैंट क्लिक कीजिए, चार्ट है। वॉल पे। और जो हाँ भी आप यहाँ और पर जो बगल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेट और कैलेंडर वगैरह उसको यहाँ क्या पर बोलते हैं? हाँ अभी ये यहाँ साइड का पर वो फेस सिलेक्ट हो गया, ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंट, एंड ये सिलेक्ट पूरा कीजिए। एमएसपी का हाँ विंडो ही है, इसको टोटल गैंट चार्ट ही बोलते हैं। आप यहाँ पर मतलब जब वो एक्टिविटी 0.15 वाला शेड्यूल जो करेंगे यहाँ थिकनेस है पर ना, सिर्फ आपको वो ग्राफिकल सिलेक्ट ही कीजिए इसकी दिखेगा, जगह। काम तो वही है। हाँ हाँ राइट, अप्लाई, जनरेट। अभी वहाँ एक बॉक्स बनाइए, स्केचिंग, गो टू Hello स्केचिंग, everyone and welcome to the Excel challenge. If you want to learn रेक्टेंगल, how लुक to एट पे create a क्लिक कीजिए, quick and मतलब वो simple प्रॉपरली timeline दिखेगा that you आपको। can use in Excel हाँ अभी and you can एग्जैक्टली adjust प्रिसाइजली your वो बॉक्स task बनाइए जो पूरा कवर करेगा। durations and your start date and end date and that sort of stuff, please stay tuned. तो रेक्टेंगल, Okay, the first thing I'm gonna do is fill some general information for the project. Project name, नहीं नहीं, project हाँ आउटर्स, duration, राइट, हाँ project start date हाँ and project end date. परफेक्ट, The name आउटर of टू the आउटर ही project is जाना gonna चाहिए be उसमें। हाँ teaching परफेक्ट परफेक्ट, ओके सर, renovation. वेरी गुड। अभी मॉडलिंग में I जाइए, don't know at this point the duration of the project. I do know we want to start on May 1st, प्लेन 8 पे क्लिक 2017. कीजिए, Just some formatting here. स्केच, 3D व्यू लीजिए और सारा शो ऑल दी The next मटेरियल्स thing I'm ऐसे going to कीजिए, do is start planning my timeline here. शो ऑल बॉडीज, यस। So I'm going to enter a task ID, 3D व्यू लीजिए ना। a task description, अरे नहीं, ये a उल्टा हो गया शायद। task duration, ठीक है चलेगा, वो and ऊपर start से लेंगे, date कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, and ठीक है। an end date. अभी स्केच 4 पे, For this मतलब आपने example, जो I'm going पहले to use किया a था वो total राइट था of शायद। हाँ स्केच 4 10 पे क्लिक tasks कीजिए, उसको एक्सट्रूड कीजिए, and let's use some borders here. स्लाइस मटेरियल कीजिए उसको, Now I can और start पूरा entering 4 मीटर the tasks कीजिए for the उसको। project. So the first task is gonna be demolition, which is gonna take 4 days to complete. The next task is gonna be install new tiles, which is gonna take 2 days. जनरेट, And the final, अभी सॉइल 2 तैयार हो गया ना, एक सॉइल पे क्लिक कीजिए, it's gonna take a day. हाँ उसको सप्रेस कीजिए। The start date for my first task is gonna be May 1st, like we said before. ओके, ये यहाँ का Now, सॉइल जो the है end वो date डिलीट हो गया। should be ओके, equals to the अभी start ये date जो आउटर दिख रहा है, plus the यहाँ duration एक of the task. फेस क्रिएट करके In वहाँ this स्लैब क्रिएट case, करना। demolition is going to last 4 days. Therefore, the end date is going to be May 5th. फिर से For this project, I'm going to assume that I न्यू can प्लेन only कर start a लेना new है आपको। task a day after I finish the previous task. That being said, the start हाँ, date for new ये जो ग्रीन task पोर्शन should आपने be सिलेक्ट किया है, equals the end date for demolition plus 1 day. वो Therefore, सॉइल है, वहाँ May आपको 6th. एक कंक्रीट का बेस To स्लैब get the बनाना end पड़ेगा date ऐसा। of new tiles, I'm going to use the same formula that I used above, and I'm going to fill down by using Control D. So the end date for install new tiles, it's May 8th, since it's going to take 2 days to complete the task. I'm going to इस fill ऑप्शन down से these क्या होता है कि formulas ऑटोमेटिकली all the way एनसिस में कनेक्शंस क्रिएट to होते my हैं, final अदरवाइज task. फिर आपको कल हमने जैसे I देखा can था see कल या here परसों की, वैसे मैनुअल my कॉन्टेक्ट start देने date is पड़ते May 1st and my end date is May 28th. Now that I have the list of tasks, the duration of each, and the start and end date for each, the next thing I want to do is the timeline. Next to my first table, I'm going to start with my start date, which is May 1st. I don't want the column to be this wide, so I'm going to choose a vertical alignment. एड मटेरियल किया तो भी चलेगा, स्लाइस मटेरियल कीजिए, मतलब वो And ये हो do some जाएगा, formatting. कांटेक्ट हो जाएंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन। And then I'm थिकनेस going to उसका drag this column 0.2 या 0.1 वगैरह जो भी है। till the end of the month. I now have May 1st until May 31st. हाँ सिर्फ इसमें The एक क्या last thing मिस्टेक I'm हो gonna गया, do here आउटर is the एज से आपको लेना calculations. चाहिए था,
Let's start आउटर with लेस project से लिया duration. तो वो In order to मतलब इसमें calculate the कनेक्ट project हो duration, I जाएगा. need the project start date and the project end date. I'm gonna delete this value here. My start date will be the minimum value in the start date range. Enter. My end date is gonna be the maximum value ठीक है, वो in नहीं होगा my चेंज. end date ठीक है, range. तो ये सिर्फ इतना ही हो गया कि इधर आउटर एज से चाहिए The था, बाकी project तो सब duration is ठीक है. gonna be the difference of ओके, the two. End अभी date जाइए मॉडल में. minus start date. Enter. अभी ये प्रॉपर My project duration सॉइल is gonna be स्ट्रक्चर 27 इंटरेक्शन, days. वाटर टैंक विद द Next सॉइल thing I स्ट्रक्चर want to do इंटरेक्शन हो is गया रेक्टेंगुलर. compare सर्कुलर का इससे थोड़ा each इजी है. column to the start and end date of each task. I'm going to start with May 1st. I want to compare May 1st and see if it's between the start date and the end date. For that, I'm going to use the if formula. And within if, I'm going to have a logical test that includes the and formula. तो अभी हम इसमें two portions. सॉइल वगैरह असाइन करेंगे. Number one, ओके, उसके बाद is May प्रेशर देंगे. 1st greater than or equals to my start date. That's the first half, comma, and is May इधर 1st ज्योमेट्री पे जाएंगे. less than सॉइल को सॉइल की प्रॉपर्टीज or equals देंगे. to my end date. Close parenthesis. If these two are true, I want Excel to drop an X in here. If it's not true, I want it blank, so I'm going to use quotation mark, close parenthesis, and वॉल enter. को कंक्रीट And की yes, प्रॉपर्टी देंगे. in fact, May 1st falls between my start date and my end date. Since I'm going to be Wait, copying forget this base formula to the right, I wanna lock बेस my लैब को बेस लैब column की प्रॉपर्टी देंगे. D, ये कंक्रीट की and I wanna प्रॉपर्टी. lock my कनेक्शंस column आप देख सकते हो कि कनेक्शंस साइड वॉल्स की वॉल And के since साथ I'm gonna डेवलप हो be गई है. writing this formula down, I उसके wanna बाद lock my हाँ, row ये सबसे 5 इम्पोर्टेंट है. फिर and बेस my लैब की भी row सॉइल के साथ 5. डेवलप हो गई है. Enter. ओके, When I थर्ड copy this formula बेस down लैब और and to the कंक्रीट की भी right, डेवलप हो गई है. तो ये तीनों कनेक्शंस डेवलप हो गए हैं. Excel does the सो trick. कनेक्शंस आर सक्सेसफुल. So now I have सो a मेशिंग timeline. नेक्स्ट जो है The मेशिंग last करना है thing इसको. I'd wanna do is change this axis for a nice formatting. So what I'm going to do is select this range. I'm gonna use some conditional formatting where I'm gonna say if मेशिंग cells होने are के बाद equal स्टैटिक to स्ट्रक्चर राइट क्लिक X, इंसर्ट. सॉइल को फिक्स सपोर्ट देना है I इसमें. wanna have a green Apply. fill. उसके बाद And नेक्स्ट I'm जो gonna है pick आप the ये same आपको प्रेशर font देना है. तो color सबसे पहले so I don't हम see an कैलकुलेशन X, करते हैं. but instead 10 a green एच ये spot. फॉर्मूला रहेगा प्रेशर का. Now I have a timeline. बेस स्लैब पे So यूनिफॉर्म now I प्रेशर can रहेगा play और with the साइड dates वॉल्स in my जो है project. साइड वॉल्स For पे example, यूनिफॉर्मली वेरिंग let's say लोड my रहेगा. tiles ओके, are delayed, सो and instead of फिक्स taking सपोर्ट के 2 बाद days, it's राइट actually क्लिक, gonna take 4 days. क्लिक ऑन प्रेशर. Let's see what happens to the timeline. Oh, रोटेशनल the एक्सेलरेशन whole के thing नीचे got है delayed. प्रेशर. Now my Okay. project duration is Click on 29 pressure. days and my So project first end we date will is select the 31 base slab. days. And let's say Apply. that installing new cabinetry, it's So not gonna now take 3 days, it's only gonna take 1 day. the calculation is like that. Timeline. It is in kilonewton per It meter adjusted square. automatically. 10 into h मतलब Time 40 for the bonus trick. kilonewton per meter square. Let's say For your project is MPA, delayed by convert it 2 into months. MPA. How much So it is? your new start या date is no longer May Pascal रहता है, it 1st, is but Newton July per meter 1st. square. Let's see Okay. what happens to the timeline. So it will be Oops, we 1000 lost it. Pascal Main reason is because on the top we have the or month of May. 10 raised to minus 3 In order to fix MPA. this, we're going to say this start date is always gonna equal my start raised to date minus in 3 this cell. MP. The Okay. value in this cell So is always gonna be after equals that, this is UDL my we have start applied. date Next plus 1 insert. day. And I'm gonna copy this formula to the right by filling it Insert with again pressure. Control R. My timeline is back regardless of the start date. So let's say my new date is actually August 1st. The dates on the top changed as Insert well. pressure. Let's try one more time. Let's say Sir, my new pressure start select नहीं date किया लगता है is आपने. October the 1st. When I hit enter, the प्रेशर dates को on the उसको top रीनेम कर changed to the दीजिए. month of October. साइड वॉल प्रेशर या My फिर new project start date is UVL October ऐसे the भी नाम दे 1st. सकते My हो. new project end date is October 28th. My project duration is 27 days. And I can continue playing with the timeline. Side the wall way I 1. want. So let's say प्रेशर 1 4 5, वॉल्स पे रहेगा ना अपना. 3, प्रेशर 1. 3, and it updates automatically. Okay.
That's it for तो today. ज्योमेट्री में 4 If you have फेसेस a आ गया chance तो that you हमें need एक help फेस with, सिलेक्ट करना whether पड़ेगा, it's at एक work, एक at फेस home, अलग at अलग school, don't अलग अलग forget to write फेस in the comments सिलेक्ट below. करना पड़ेगा. I तो try to ज्योमेट्री में resolve जाके most यहाँ जो common challenges 4 of फेसेस our दिख रहा है ना viewers सर, and एक फेस subscribers. सिलेक्ट कीजिए सर. Thanks for ओके. watching and I'll see you in उसके the बाद next नेक्स्ट video. इस पे 3D पे क्लिक कीजिए, या फिर Z पे क्लिक कीजिए. फ्रंट व्यू से आपको इमेजिन होगा इसमें. तो इसमें जो बॉटम पे सबसे मैक्सिमम रहेगा और and टॉप पे welcome to 0 Excel रहेगा. 2016. इस हिसाब से हमें देना My है. name is Sean तो Bugler, यहाँ and today we're going to be going over some डिफाइन of the बाय more में जाइए एक advanced मिनट. features inside of Excel टाइप में 2016. Let's go ahead and नहीं get नहीं started. सॉरी मैग्नीट्यूड में जाइए. Now, as we're looking at this data set येलो जो here, दिख रहा है आपको, it's interesting to see how this has यहाँ already been set टेबुलर up. डेटा, Now, there's a couple of things that we need to take care of before we go any further. इंडिपेंडेंट वेरिएबल We're वाई, looking at a couple of sales figures here from February of 2015. And we need to calculate the Y-axis. totals for Okay. each individual अभी यहाँ salesperson. पूरा डिस्टेंस आपको टाइप Now, करना पड़ेगा. I know full well that 0, we're all capable 1000, at this stage of उसके बाद typing in an नीचे equal टाइप कीजिए sign, 2000, summing 3000, up. 4000, just like that. But I'd like to या फिर introduce a concept to you डायरेक्टली guys शॉर्टकट today that's बताता हूँ going to आपको. come in रहने handy दीजिए not सर, just for this डायरेक्टली particular 0 exercise, और but for हाइट कितना है many of the 4000 things है that we're ना, going to be doing in डायरेक्टली later 4000 ही lessons. टाइप कीजिए, बाकी डिलीट कर दीजिए सर. It's nice that we're able to tell Excel, hey, वो ले just sum लेगा up this अपने. range of cells. But at the end of the day, क्योंकि ये वैल्यूज the आपको problem is, इंटरपोलेशन we're करके still आपको trying फाइंड to करनी speak to पड़ेगी. Excel जैसे अभी in its own language instead हाँ of speaking on इसमें our own. 4 पे क्लिक कीजिए और If we डिलीट were कर going to ask दीजिए. somebody to sum up how much right S click कीजिए, jobs sold delete between row weeks 1 and रहता है week option. 4, we would say, hey, can you sum up Delete S rows. jobs sales? Not B5 through E5. So why do we have to do that for Excel? Why can't we say, hey, sum up S jobs and have it know what we mean? 0, 4000, In fact, we 1000 can. भी डिलीट कर This दीजिए. is called named ranges. And to create them, और सेम we're वैल्यू actually going to डालिए, need to dive into the 1000 formulas e raised to tab. -3. Go ahead and join me here inside the formulas tab. And we're going to find the defined names command group. Now, the defined names command group is here because in most instances, named ranges are for ये formulas and आपका UDL हो functions. गया. In fact, that's where they come in handy the most, and that's where we'll be फिर using इसको them कॉपी most. कीजिए. So keep 1, that in 2, mind 3, when you're 4. trying to remember where the defined names command Duplicate. group is. Where do you use them? Inside formulas and functions. So you'll find them in the formulas tab. What we'd like to do is tell Excel that these 4 cells, B5 through E5, are S jobs sales. So go ahead and highlight from B5 to E5, and we're going to use the Define Name button, which allows us to define the name of a selected field of cells. Give it a click, and check it out. It's automatically guessed that we're going to name it S jobs, given the fact that it was the cell with text immediately to the left. Now, it's not always going to guess correctly, so do ठीक है, make अभी sure आप that you जब double स्टैटिक check that स्ट्रक्चरल पे before क्लिक you click करेंगे OK. तो आपको ये दिख जाएगा. However, 1, 2, 3, 4, You 5. don't have to use that name. You can always type in your own. It is important to Okay, remember, let's go however, down. that spaces do not play nicely inside of named ranges. Notice that even in Excel, it's placed in some underscores. The next thing we're going to need to keep in mind is the scope. Where are we going to be using this named range? By default, it's going to expand this to the entire workbook. However, we can always limit named ranges to specific worksheets instead. However, for the purposes of this class, we're going to leave it as workbook. You do have the option of putting in comments if you'd like, but in this case, I'm going to go ahead and leave it blank. It is important to note, however, that these can be incredibly useful, especially if you're going to be creating lots of named ranges. The last thing is the refers to field. This is where you can make any last-minute edits in case it missed So a this couple is of complete cells. water In tank this with case, soil I click structure inside the interaction box, with I can see UDL the and dancing UVL. answer around exactly what I want. तो So I'm कल gonna हम lock it in by clicking सर्कुलर OK. वाटर टैंक लेंगे. कल अपना वेबिनार है 3ds It's a मैक्स little पे. anticlimactic, and in आप fact, फ्री it है. doesn't seem अगर like a lot's आपको happened अटेंड just करना है yet. तो आप भी कर सकते हैं. But rest आपके assured, friends what वगैरह we've उनको done भी now forward is we've told Excel that these 4 cells are S jobs. So now I can place my cursor inside the totals field, and just like with any function or formula, I'm going to do my equals, sum, open parentheses, but this time, instead of selecting the cells of the range, अभी किसी को कुछ डाउट है I'm going to इसमें? go ahead and press the F3 key. हेलो. नहीं सर, प्रैक्टिस करने के बाद देखते हैं अगर डाउट आ गया तो. And check it हाँ out. चलेगा चलेगा. तो ऐसे ही There's करेंगे. S jobs. प्रैक्टिस कीजिए आप Go ahead and और find प्रैक्टिस S करने के बाद jobs जो भी and डाउट्स है अगले double click सेशन में हम कवर करेंगे. to add them to the list.
Okay, ठीक, thank you. you'll see that sjobs is now available. By closing out the parentheses, I can complete the sum, and by pressing enter, you'll see now it's taken all 4 cells that I told were sjobs, and it's summed them up. There's my function. Pretty cool. Go ahead and pause the video to catch up to me here. Once again, the way we created that was by highlighting the cells we'd like to name, navigating up to the Formulas tab, and using the Define Name tool to define the name as sjobs. From there, we simply, in the totals field, typed in equals sum, open parentheses, sjobs. Go ahead and try that for yourself, and then come back. Welcome back. So you've gotten your first taste of named ranges. But I can hear your concern. Some of you might have tried to autofill down, and you'll notice that when we did, it simply replicated some sjobs. Wasn't quite what we hoped it would be. It's important to note that this isn't necessarily a real-world use case. This is simply an introduction into what named ranges are. Rest assured there are plenty of real-world use cases we'll be going over in the next couple of lessons. Another concern that tends to pop up during these lessons is there are 5 other individuals here. Do I really have to go in row by row to define these names? The answer is yes and no. Yes, if you want to. However, no, if that feels like a waste of time. If you'd like to get this over with, and believe me, I would too, we're going to go ahead and highlight the remaining values, starting this time by including the salesperson's name. So I'm going to click and drag from E. Musk all the way down to the final sale value of $10,252. This time, instead of using the Define Name tool here in the Formulas tab, I'm instead going to find the Create from Selection button. It's important to note that this tool only works if there are row labels or headings. In this case here, I'm going to go ahead and click Create from Selection and check it out. Where are the names that it's going to create from? Are they on the top row? Not so likely. However, they are in the left column. E. Musk, W. Buffett, M. Mayer, S. Sandberg, and so on. So, those are our names. Let's go ahead and click OK. Yet again, at first glance, it doesn't look like a lot's happened. But let's take a look and see. Just like in the last process, I'm going to go ahead and start by calculating E. Musk's total sales. I'm going to start with my equal sign. Now, I can use my F3 key and pick the name from the list because check it out. Hey, that Create from Selection created all of them in 2 clicks. But I can also use the Use in Formula dropdown available in the Formulas tab. By clicking on that, I can choose another named range from the list. For those of you with computers that don't have a functional F3 key, you can always use the Paste Names field from this as well, and that'll pop up the Paste Name box. Either one will work. In this case here, I'm going to go ahead and select from the list, E. Musk. Don't forget my sum. Close out the parentheses, and there we go. So go ahead and take this opportunity to catch up here, and then calculate the remaining values for W. Buffett, M. Mayer, S. Sandberg, and A. Arenditz. Go ahead and pause the video and catch up. Welcome back. So already, hopefully, you're starting to see that creating named ranges is easy. A little too easy, really. And in fact, because it's so powerful, you're going to increasingly see its value as we go through this process. The next thing we're going to need to do is calculate the total sales and average sales. Now, in order to calculate those, of course, we can go through our standard process, but for the sake of practice, we're going to use named ranges yet again to sum up total sales and average all sales. So go ahead and highlight everything in the totals column, from sjobs down to A. Arenditz. And once you've done that, inside the Formulas tab, go ahead and use the Define Name button to calculate February totals. This time I'm going to go ahead and add on to this already pre-filled name. So now I've got my February totals. I'm going to go ahead and click OK to lock that in.
And now I'm also going to go ahead and highlight everything from week 1 to week 4. Having highlighted that, there's not really any place for me to create from selection because this time there is no header. So I'm definitely going to have to define a name here. And in this case, I'm going to go ahead and call this all sales. And click OK. Now that I've created those two named ranges, I can now calculate the total and average sales. Here in total sales, I'll type equals sum, and then using either the F3 key or the use in formula dropdown, I'm going to select February totals and close out the parentheses. And likewise, I'm also going to, in the average sales field, type my equals average, open parentheses, and then select all sales from the use in formula dropdown. Close out the parentheses, and it'll lock it in. Another benefit of having used these name ranges is that now these formulas are practically in English, meaning that I can glance at any one formula and find out exactly what totals I used, what numbers I used, where these data points are coming from. Go ahead and pause the video to catch up with me here. Once again, we created two named ranges. The totals named range, which we then used to sum up total sales, and the all sales named range, which we used to calculate the average everyday sales. Go ahead and catch up to me, and then join me after the pause. So that's your first taste of named ranges. Don't forget it. Rest assured that this is coming back very, very soon. In the meantime, let's shift gears. We've calculated all the total sales. In fact, we've calculated the total sales and average sales for all of February as well. What we'd like to do now is complete the rest of the data set. Now, currently it's asking, was the goal met? And as I look around, I see there is a monthly goal of $34,000. So, let's take a look. In regards to S-Jobs sold $36,245. Compared to a monthly goal of $34,000, I think it's readily apparent that S-Jobs did in fact meet the goal. So I guess I just type yes, right? We did it! What's the problem with this? Why can't I just type yes? Well, the problem is, I didn't tell Excel how I knew that the goal was met. I just told it that it was. The problem with that is, let's say I turn this into a template and use it next month for March 2015 sales. Well, if the numbers update and let's say S-Jobs doesn't do as well, and the sales drop below 34,000, that cell is going to continue to say yes. So, it's not necessarily doing exactly what I hoped it would do, but I thought Excel was smart. It should have known, right? Not yet. We've got to tell Excel how we got there, and how we got there was by using logic. So let's teach Excel the logic we used. In this example, we're asking a question. Was this cell greater than this cell? Did the total beat the goal? In order to ask that question to Excel, we have to posit it in a very specific way, in a very simplistic way. Basically, we have to ask, is something true or not? And to do that, we have the if function. The if function allows us to ask Excel a question and, depending on the response, respond accordingly with either if true, do something, or if false, do something else. So let's go ahead and type our first if function. Now I know many of you who already work with functions are comfortable typing these functions by typing equals, if, but you've actually been doing it the hard way. Not the wrong way. And in fact, if after this lesson you decide to continue doing this the exact same way you've always done, that's fine. But I'd like to show you guys a new way to inject functions, especially complex functions, into Excel. Placing your cursor in cell H5, we're going to go ahead and find the Insert Functions tool. This can be found to the left of the Formulas tab. By clicking on the Insert Functions button, you'll see a little search field. I'm going to go ahead and search for if. And once I've typed if, I'm going to click Go.
This is an actual library of every single function inside of Excel. By typing if into the search function and clicking go, I can bubble if up to the top. And on top of that, I actually get a description of what if actually does. And where better to get a description than from the people who actually wrote the code. In this case, Microsoft describes if as checking whether a condition is met, and then returning one value if true and another value if false. Makes sense to me. Once you find the if function, go ahead and click OK, which will bring you into the function arguments box. The function arguments box exists for every single function inside of Excel, even the simplest ones like sum. What it does is it compartmentalizes each individual part of the function into its own little box. This allows you to focus on one individual part of the function at a time, allowing for the utmost focus and control. As we go through this here, you'll see the benefits. The first thing it's asking for is the logical test. Now, if you're not entirely sure what the logical test does, you can always look down here at the bottom. No matter where you are, if you click inside the box, it'll tell you what that box is asking for. In this case, the logical test is any value or expression that can be evaluated to true or false. This is our question. In this case, the question is the total cell greater than the monthly goal? So let's go ahead and take that into account. I'm going to just click on the total cell. So F5, was it greater than or equal to I2? And interestingly enough, because we're inside the function arguments box, it's actually automatically answered that question. In this case, F5 is greater than I2, so we know, because it says true, that our question is right. The next thing it's asking for is the value if true field. What do we want Excel to do if the cell is true? If the question is true, we probably want the box to say something like yes. So let's go ahead and type yes. However, it's important to remember that you can't just type text into a function. You have to remember that if you're typing an actual text field that's not a function, you need to surround it with quotations. Once you've done that, go ahead and tab down to the next field.